Good morning, everyone. Welcome to today's pre-market analysis. So, I hope my audio and screen everything is visible. I will check once. Okay. I hope okay. So, we are running a bit late today, sorry, and we'll start off with Nifty straight away. I'll change these lines. So, we are back at again 26,000, about 26,000, right? As of Nifty, so the pivot line lies for Nifty today is at 25,992 exactly. We will mark it as 26,000 only because it is acting as a psychological level. So pivot point for Nifty we will mark it as 26,000 as of now. And with respect to this pivot line, the support one is lying at 25,930, 38 it is exactly. We will mark it at 40. And support 2 is at 25,850. We have close range between the supports and resistance for the day. And support 3 is at 25,800. It is 8, not 800, 790. We will mark it at 790. And with respect to the resistance part, if we see resistance 1 lies at 26,089. So we will mark it as 90, 26,090. And R2 is at 26,135. It is, we will mark it as 140. And R3 lies at 26,230. So these are the levels with respect to Nifty for the day, and we will quickly mark the zones out. So 26,000 we will mark it as today's pivot line. PP. And with respect to the resistance part, 26,090 we will mark it. 26,090. Almost 126,090. So this is the resistance one, and with respect to the zones, we will mark that as well. 26,140. 140 and between 26,230. And on this it will be between the support one, which is at 25,940. We will mark it out 2940, and with respect to the other zone, it will be our first resistance, which is at 26,090. And on the bearish side, support 1 and 2, 26,000, 25,940, and between 25,850. So we'll mark the third, this thing 25,790 also we will mark as the third support, 790. So these are the levels with respect to Nifty today. So we will come back and explain regarding the levels and the trade setup. So we'll quickly move on to the Bank Nifty levels. So with respect to Bank Nifty also, if you see, we are having a very good bull run, and we are kind of retouching the liquidity points and the OI based zones of Bank Nifty. So we will start off with Bank Nifty's pivot point. So Bank Nifty's pivot point lies at 59,350. 350. It is exactly 48, but we rounded it off.
So support one is at 59,170. We'll mark 59,170, and support two lies at 59,870. 870 or nearly, and support 3 lies at 58,000. So this is 58,000. 58,690. So these are the three supports, and we will mark off the resistance as well. So resistance, first resistance lies at 59,650, and resistance 2 is at 59,830, and resistance 3 is at 60,130. So these are the levels. With respect to Bank Nifty, we will mark 59,350 as our pivot line, 350, and our first resistance, the yellow line, at 59,650. 650, and our first support to be at 59,170. Okay. So these are the three levels. I just simply marked the resistance one, pivot line, and this support, first support as well. So you can see that it's already trading above our pivot line. So any movement above this, we can continue with the bullish sentiments in the market. So if we get a pullback to this particular level, then again we can try out a bullish side entry from this level, or else if it is opening in anywhere near between this level, so we will wait for the first 15-minute range to happen, and we will trade the breakout of that particular 15-minute range, or either we can go for the 45 minutes range as well. So these are the levels regarding Bank Nifty, and we will move on to the Sensex part. So with respect to Sensex, the pivot line lies at 85,110. The PP is at 85,110, and with respect to that, the support one lies at 84,942. We will mark it as 40, and support 2 lies at 84,670. 84,670, and support 3 lies at 500. 84,500. This is where the 3 support comes, and resistance 1 is at 85,380, and resistance 2 is at 550. 85,550, and resistance 3 is at 85,820. So these are the three levels with respect to Sensex. So we'll mark off the pivot line, which is at 85,110, and resistance, first resistance is at 85,380. 85,380, and support is at 84,940. So similarly to our Bank Nifty, this is also trading above our pivot line, which indicates. So I personally see it as a bullish momentum in the market, but we just need to consider this pivot line. If we are getting a pullback to this level, and if we get an entry to this from this particular level, then we can write to the R1, or else any movement below this can flip the market to the bearish sentiment. So you just have to be very concerned regarding, like, you just have to be very aware about this particular level. So if any movement above this with a proper volume to support that direction, then definitely you can go for the bull side entry once again. So we'll come to Nifty. We might have got our pre-market opening. So pre-market, it is opening below our pivot line. So yeah.
951 it is opening, so it is opening to near to our support one exactly. So as it is below this level, if it is not retesting this particular pivot line level or reclaiming this level and like close above this particular level, until and unless it is trading below this, I will still have a bear side movement. And if it is retesting on this particular level, then after closing above this level, then definitely you can take an entry on the bull side with respect to today's pivot line. So we will have a quick look at FIA data. So on 15th, if you see, it is almost similar trend continuing by FIA. So we can see that 1,400 CR of net value have been rounded off by FIA, and similarly to support that DIA have added 1,800, almost 1,750 crores into the cash market. And regarding the FIA sensible data, so with respect to the FNO part, we will see that. So it is net bearish today, so that explains the start. So anyway, any movement above this can we can validate the bullish momentum again. And if it is closing above this pivot level, then definitely you can plan a trade from this particular level. Or if it is consolidating on this level, and if it is coming back to this particular level and bounce reversing back, then you can plan a bear side trade from this particular level. Either if it is consolidating on this level, and if it is breaking down below this level, then definitely we should try out our put side entries only from our support one. And you can place your target, first target at this level, and second followed by the support 3. So these are the levels with respect to Nifty 50. And you can consider these levels to plan your trade and partial booking levels, as well as your trailing as stop loss also. So you can utilize these levels with regarding this kind of setups in the entries you have been taking. So one of my friend was asking regarding how I am calculating this pivot line. So it is simply the high. So it is high plus low plus close divided by 3, whole divided by 3. This is what I do for the pivot line. So it is just the classic method. So this is for pivot point, to identify pivot point. And other than that, so what exactly I'm using, that the classic method. It is, we have indicator also for that. So for finding pivot line, I use this formula: high, low, plus, and close, whole divided by 3. And for the support one and resistance, we, after getting the pivot line, we will multiply it with this particular level, and we will minus it with the low exactly. I'll explain that in detail in another session, not in live sessions. I'll plan out a session for that, and I'll explain that. But anyway, I just want everyone to know that I'm using classic method of pivot. This is what exactly what I am using for this, finding out these levels. So whatever trade I am taking, and this uh, like selection of strike and everything is based on the most probably on ATM or in the money, but I go for the OI based zone especially. So I validate my movement with respect to the volume. So if there is enough volume to support my direction, then definitely I'm gonna take that entry on that particular side. And I use this levels as a like I said, as an entry point, or as an SL, or as a target, or trailing SL partial booking level. So I use these pivot levels as to find out and all these things with regarding that. So anything other than anything to validate my move or entry or a direction, then I go for volume and OA based zones only. So this is what I exactly do. So on a simple basis. So that's all for today. So I'll wind up the session today. I wish everyone a good day, and trade with a proper risk management, and have a happy day. Thank you. Thank you, guys. सर डायरेक्टली आज किस ना कॉल में फोकस करना है पुट में तुषार जी मैं दिखा देता हूँ
देखो, मार्केट मतलब यही ओपन हो रहा है तो as long as मतलब जब जब तक मार्केट इसकी पिवोट लाइन से नीचे रह रहा है, मैं तो हमेशा बियर साइड पे ही हूँ। अगर ये लेवल मतलब ऊपर को क्रॉस कर रहा है, यहाँ इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो देन हमें मतलब यहाँ से एक बुल साइड एंट्री प्लान कर सकता है। अगर यही रह रहा है मार्केट फर्स्ट 15 मिनट पे, तो फर्स्ट 15 मिनट की रेंज हम मार्क करेंगे, ऐसे जैसे भी हो 15 मिनट की रेंज जैसा बन जाएगा आप मार्क कर लीजिए ना, और इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखते रहना। उसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री ले सकते हैं, उसका एसएल इसी पॉइंट पर रख सकते हैं। अगर ये लेवल्स बड़ा है, मतलब मान लो कि इतना मतलब 100 पॉइंट्स के ऊपर है, तो फिर आप ये एंट्री इसके आधा पे एसएल रखना चाहिए, यही से मतलब आप एंट्री लेना चाहिए, मतलब वही से 1:2 हमेशा रख देना। अगर आप 2 लॉट्स ले रहे हैं 1:1 पे पार्शियल बुकिंग कर लेना, और प्रॉपरली एसएल फॉलो करना जरूरी है आपको। तो पुट साइड या कॉल साइड हम ओपन करके, मतलब अभी देखो हम एफआईए डाटा अगर देख रहे हो तो नेट बियरिश है, पर क्या पता उन लोगों की अगर पोजीशन एग्जिट हो गया तो फिर मार्केट दोबारा बाउंस करेगा। अगर हम कल भी ये चीज देखा था, यही ओपन हुआ, नीचे ओपन हुआ फिर दोबारा ऊपर आया, तो फिर आप ये लेवल थोड़ा नोटिस कर लेना। अगर फर्स्ट इनिशियल टाइम पे यही रोटेट करते रह रहा है, तो फिर 15 मिनट का रेंज पे जा सकते हैं या 45 मिनट्स का रेंज पे। वरना हम ये देखना है कि इसके ऊपर ये चल मतलब अगर इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बुल साइड एंट्री। तो देखो मार्केट ओपन हो रखा है, ओपन होते ही मतलब थोड़ा हल्का बुल बेयर का ये चल रहा है, तो फिर ये एफआईए डाटा के हिसाब से नेट बेयरिश है। वी कैन प्लान ट्रेड्स इफ इट इज सपोर्टिंग दिस लेवल्स। अगर ये ऐसा लेवल्स पे एंट्री, देखो हमारा एंट्री यहीं से हो सकता है, पर जस्ट स्टार्ट है, हम कुछ भी अभी नहीं कह सकते, फॉर वेट फॉर दैट फर्स्ट इनिशियल मिनट्स, उसके बाद हम एंट्री का प्लान करेगा। अगर ये लेवल मान के चल रहा है, तो फिर इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है बुल साइड पे जाने के लिए, तभी मैं बुल साइड जाऊंगा। जब तक ये मार्केट इसके नीचे है, तो फिर बैर साइड का ही ट्रेड में लूंगा। हम्म, ठीक है भाई, क्या लिखा है मैं समझा नहीं। माता, जय माता जी, ओके। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये शिवू सितु जी, मतलब ये क्लासिक लेवल, मतलब पिवोट लाइन का क्लासिक फॉर्मूला यूज करता है वो लेवल्स मार्क करने के लिए। और प्रीवियस डे हाई लो, हाँ प्रीवियस डे का, अगर हम डे कैंडल पे देख रहे हो तो प्रीवियस डे का हाई लो एंड क्लोज मार्क करके उसको डिवाइड करके हम पिवोट लाइन मिल जाएगा। पिवोट लाइन मिलने के बाद हम क्लासिक लेवल की फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, सब वो लेवल सारे मिल जाएगा। और आई एम बिगिनर, कैन यू एक्सप्लेन बिट स्लोली? ओके, मैं हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी, I will explain in English once more. So I respect these level to consider it to a bull side or a bear side entry. So any, if the market is reclaiming this level and closing above the pivot line, then definitely I'll have a bullish view. I go for a bullish trade from this level. So as long as it is below this level, then definitely I'll have only a bear set mindset. So an entry I can plan from this level, or a retest to this level and reverse like can plan. So I use this pivot level as an entry or as a SL point or a partial booking area. This is how I utilize these levels. मेरा नाम विपिन। जी मैं हिंदी में कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये लेवल पिवोट लाइन लेवल को रेस्पेक्ट कर लेता हूँ। अगर उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज हो रहा है, तब जाके मैं अपना सी साइड, बुलिश साइड का एंट्री का प्लानिंग करूंगा। जब तक ये इसके नीचे है, मेरे को बायर व्यू रहेगा। जो ये पिवोट लाइन मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये सारे लेवल्स मैं उसी हिसाब से वो मतलब अपना टारगेट रखना, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, और फिर एसएल कहाँ रखना, ये सारे चीज पार्शियल बुकिंग सारे चीज ये लेवल के हिसाब से कर लेते हैं। तो स्ट्राइक सिलेक्शन सारे हम जो एट द मनी स्ट्राइक जो भी हो 50-50 पॉइंट्स के आगे पीछे जा सकता है, जो मतलब जो भी लेवल्स मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। और मेरा कंफर्मेशन में यहाँ अच्छा वॉल्यूम अगर मिल रहा है 15 मिनट 5 मिनट्स पे डाल के, मुझे अच्छा वॉल्यूम बेस्ड मूवमेंट मिल रहा है, तो फिर मैं जो भी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहता हूँ उसका एश्योरिटी ले लेते हैं मैं। बस ये लेवल्स मैं इसीलिए इस्तेमाल करता हूँ अपना एंट्री
एग्जिट, पार्शियल बुकिंग, ये सारे ढूंढने के लिए। मेरा नाम विपिन है भाई, और हिंदी में ही तो बोला भाई। ये लेवल है ना, आप चेक कर, मैं ये पीवोट लेवल चेक करते रहता हूँ, अगर इसके ऊपर आ रहा है तो मैं कॉल साइड का एंट्री ले लेता हूँ। अभी अभी फिलहाल हमें मतलब कॉल साइड का एंट्री का कुछ भी नहीं है यहाँ, जो मार्केट इसके नीचे ही हमारा सपोर्ट वन पे ही है। अगर एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लगा के देखो, अभी 15 मिनट का हाई लो, अभी इसके इतना बगल पे है तो फिर हम यही लाइन मान के चलते हैं। पर यहाँ से अगर ये सस्टेन कर रहे हैं यहाँ, तो फिर हम यहाँ से बुल साइड, बेयर साइड एंट्री का प्लान कर सकते हैं जब, बट अभी हम वेट करेंगे फर्स्ट 15 मिनट या इसका क्लोजिंग होने पे 25 सेकेंड्स भी है। पर ये लेवल सारे आप मतलब एंट्री एक्सिट पार्शियल बुकिंग के नाम पे रख लेना, जो भी एंट्री हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं। पर वॉल्यूम, जितना सारे वॉल्यूम इसमें है अवेलेबल प्राइस एक्शन के, प्योरली प्राइस एक्शन के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। देखो 5 मिनट्स में लगा देता हूँ, हमें कैंडल देख के ही पता चल जाता है वॉल्यूम है कि नहीं इसमें। देखो इस लेवल से हमें अगर इसी लेवल की, ये कल का लेवल नहीं है, फिर भी अगर यहाँ देख रहे तो यहाँ प्रॉपरली यहाँ ऊपर से हमारा पिवोट लाइन से आके फर्स्ट वाला सपोर्ट पर टच किया, वहाँ ये लिक्विडिटी जोन माना जाएगा, मतलब यहाँ से आके पूरा स्वीप करके फिर दोबारा ऊपर को आया, यहाँ आके मतलब 3 ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ भी है यहाँ। और यहाँ ऊपर जाने की बाद इट वेंट अप एंड अगेन कम टू, थोड़ा सा एक नीचे आके इस लेवल पे, हम इसी लेवल पे अगर यहाँ आके रखा तो एक पुल बैक एंट्री हमें मिल जाता था। पर इसी ब्रेकडाउन से हम एंट्री लिया तो हमें आराम से फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रख सकता है, और सेकंड टारगेट के लिए यहाँ रख सकता है। पर यहाँ हम पार्शियली बुक करना है, पार्शियल बुकिंग यहाँ करना है। तो वन से अगर एक लोट से ज्यादा है तो फुल फुल मतलब एक ही लोट है तो फिर मैं यही बुक मारूंगा, मेरा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यही बुक करूंगा बस। अभी भी मतलब 5 मिनट्स पे टाइम फ्रेम पे उसके नीचे ही है सपोर्ट की। तो मेरा अभी भी व्यू मतलब अस इसके नीचे अभी भी मेरा भी बेरिश है। जब जब यहाँ, अब यहाँ से अगर ऊपर को जा रहे हैं तो फिर इसी लेवल से रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं, और अगर इसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो फिर यहाँ से पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं, या ब्रेकआउट एंट्री दोनों भी ले सकते हैं। एनी मूवमेंट from this particular level with a very high volume can validate your entries. So okay guys, I'll wind up today. Thank you for joining, and I wish everyone a good day. Thank you so much.